Saransh. Good afternoon, sir. Good afternoon, Saransh. How are you? Sir, I'm fine. Can you give a brief introduction about yourself? Sir, my name is Saransh Gupta. I did my schooling from my hometown, Shivpuri, Madhya Pradesh. Then I did my BTech in civil engineering from IIT BHU, Varanasi. This year, I gave GATE and I secured All India Rank 3. And this is my first attempt in engineering services. Okay. This was your first attempt in engineering services. What was your rank in GATE? Sir, third rank, All India Rank 3. And you have graduated just this year. Yes, sir. Okay. What has been your academic performance in IIT? Sir, I had 8.34 CPI in my college. Okay. So academically strong, GATE rank also fantastic, and cracked the UPSC also. Engineering services, you have cracked the mains also in first attempt, right? So, is this your final goal to be selected as ESE officer, or will you be looking for something else in the future? No, sir, I haven't thought about it. And this is, as far as now, this is my final goal. So, To if you are be, selected, you will be serving under this yes, capacity. Okay. yes. So, have you got any placement also? Yes, sir, I was placed in join because I did not, I want to give my best attempt in engineering services. Placed in what? I think voice was interrupted. I could not hear. Placed in? I was placed in Tata projects. Okay, 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 okay. For what profile? Sir, as an executive trainee. Okay, okay. So you're working there, or you did not join? No, sir, I did not join. Okay, okay. Reason behind that? Sir, firstly, because I want to be a part of engineering services, and for it, I wanted proper time for preparing for my interview as well. Okay, So that's why I did not. okay. Can you tell me something about your place, Shivpuri? Something which may be famous there, which can be attractive there. Sir, Shivpuri is in brief history was known as the summer capital of the Sindhyas, and there are many tourist attractions such as Madhav National Park in Shivpuri, and Kuno National Park is just 60 to 70 kilometers from Shivpuri. Sir, these are some of the famous, and there is a uh, training center for intelligence bureau in Shivpuri. Okay. So you are mentioning that yes, you will be serving under the this capacity if you're selected. Can you tell me three of your good qualities why you should be selected as an IAS officer, and three of the bad qualities why you should not be selected for this post, specifically for this particular capacity? So the three things which I think why should I be joining is firstly my commitment towards my work because I had been consistently performing since the last there has not been any single gap. So I don't take things for leisure. And second thing, sir, I have good time management because in college, sir, it becomes extremely difficult to manage your college as well as to prepare for engineering services and gate. So I'm good time management and as well as I am a fast learner, sir. During my college placement times, I just got 2 days to prepare for interview and all those things, and I was complete fresher. I never had any interview experience. But then too, sir, I competed against those who were preparing from past 2 3 months, and I was selected out of from one of the 8 members. Sir, regarding why should I not be joining? Sir, I take it differently that some of the things which I think I need to improve in my personality. Sir, first thing is knowing the line between am I actually helping someone or am I doing someone else work? Because this is something which I have actually realized in the past 1 year that sometimes in an attempt of helping someone, I tend to do his work which he can do, which he could have done easily. Sir, secondly, the problem of not saying no, of problem of saying not able to say no. This was something which I used to suffer, but this thing uh, uh, I have improved a lot. And sir, these two things which I think are something which I am improving in my personality.
So in your DAP, you also mentioned that you like playing cricket and you have participated in some tournaments as well. So Yes, you play it casually or is it your regular hobby? sir. I played casually from the past 1 year. I have not been practicing it much, but before it, I used to play 2 to 3 times in a week. So at that time, I was. What are the current updates of the ICC World Cup, ICC Yes, sir. Men's World Cup? Yes, sir. India has won on both the matches. So South Africa yesterday won by Australia by a huge margin, and he is the table topper because he is South Africa has a very good run rate. Other than that, the top four teams which are in the table are South Africa, India, Pakistan, and fourth I am not aware, sir. This is the current scenario. Tomorrow it's India versus Pakistan. Okay. So you have been, you have also served as the head boy of school. Some Yes, leadership qualities also can be expected from you. So, yes, say for example, you have been appointed as the captain of our men's cricket team. Okay, yes. just right now, what will be the changes that you would like to do in the current team setup? World Cup is going on, 2 matches we have won both. Okay, but many more matches to go. So, what are the changes that you would like to do in our team? Sir, I would not say changes, but something which I think needs to improve is that is the young players which come into play. That last match Ishan Kishan was playing, I saw him somewhere he was not mentally strengthened because in the first match Rohit Sharma also went for a duck and as well as Ishan Kishan. But in the next match, the personality which Rohit Sharma had and what the personality which Ishan Kishan had were entirely different. I think there needs to be some mental preparedness for the same. I'm not sure whether it's given by BCCI or not, but if I am captain, I would surely take this into consideration. Other than that, sir, India is performing extremely well. Okay, so what are the chances for the World Cup? Sir, India will definitely win the World Cup. Okay. In cricket, there is some fourth umpire also. Yes, What third. is the role? What is the role of fourth umpire actually? Usually, we see only three umpires majorly into action. Sir, sorry, sir, I'm not aware about the role of fourth umpire. Okay, chalo, no problem. Abhinav sir. Okay. Hello, Saransh. How are you? I am fine, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Saransh, what is the difference between spin and swing? Sir, spin is generally regarded for slow bowling, where the bowler does not take a long run, but a swing is when a bowler takes a long run and throws the ball at a higher speed, and then the ball deviates. This is something which I can. Okay. One more difference, na? Spin is a 4-letter word and swing is a 5-letter word. As you have given the answer in that context, one more reason can be there. Okay. Saransh, do you heard about Cozen-Kármán equation in soil mechanics for permeability? Sir, sorry, sir, I'm not able to recall, but I No, have heard no, about I'm it. not asking that empirical formula, but that from that formula, if void ratio is more, then permeability is more or less according to that formula. Sir, okay, sir, the permeability is directly proportional to E cube upon 1 plus E. So, it depends on, sir, a certain range, a certain range. Within a certain range, it increases, and after some time, it decreases. Okay. So if in that range you're talking where with increase in void ratio, permeability increases. In that case, for fine grained soil, the void ratios are more. So Yes. then permeability should be more. Sorry, sir, I can't interpret this. Sorry. Okay, leave this. According to you, if y is equal to x cube upon 1 plus x, you said that probability is e cube upon 1 plus e. So that will Yes, be, sir. according to you, it may be an increasing function or decreasing function depending upon the value of x. Sir, we need to firstly differentiate it and find the slope, and then we can judge whether it is increasing or decreasing. Okay. Saransh, suppose there are two vehicles, vehicle A and vehicle B. Yes.
Both are moving on same road, same velocity, and both applies brake. Suppose vehicle A has a retardation of 10 meter per second square and vehicle B has a retardation of 1 meter per second square. Vehicle A has a retardation of 10 meter per second square. Vehicle B has a retardation of only 1 meter per second square. Both moving on same road, same velocity. Which will stop first? So, I think the friction will come into play. If the value of the force, this is mu into the normal force, the actual frictional force, which the vehicle is coming. The mu into F, the value is, if it is more than 1 meters per second square, then the vehicle A will stop normally, but the vehicle B, which is moving at 10 meters per second square, it will skid. And so both will, in that case, vehicle B will stop first. And if it is less than 1 meters per second square, then both the vehicles will stop after having certain skid. Okay. What is super elevation? So super elevation is a cross slope, which is increasing the elevation of the center line so as to increasing. No, sorry, sir, not from the center line, but increasing its slope so as to allow comfortable movement and safe movement over a curve, horizontal curve. Okay. What is the foundation of Taj Mahal? Sir, as far as I'm aware, it is maybe it is well foundation. I'm not sure about it, sir. It is well foundation. Okay. Okay. And what is the foundation of the famous building that is a marvelous of civil engineers, Burj Khalifa? Sorry, sir, I'm not aware about it. Okay. If Poisson ratio is 0.5, in that case, what is the volume change? Sir, there is no volume change. From the formula, volumetric strain is sigma x plus sigma y plus sigma z within bracket 1 minus 2 mu. So mu is 0.5, it will be 0, correct? No volume change. Yes, So now for rubber, mu is 0.5. approximately, yes, sir, 0.5. Approximately 0.5. Now there is a balloon without air and now we filled it with air. So volume changes, Yes, sir. but it should be Changes. 0. But it should be 0 according to that formula. And almost 0. If mu is almost 0.5, then volumetric strain will be almost 0. But here the volume changes many times. So ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? Where is this mistake? Sir, in balloon, actually, we are creating pressure difference and putting air inside, whereas in rubber, we are applying external force. So I think that might be a case for which, due to which the volume changes in balloon and not in rubber. Okay. Suppose there is a simply supported beam loaded with UDL at the leftmost end at the support at the top fiber. Cross section is rectangular. Simply supported beam, cross section is rectangular, UDL, most ideal case. At the left support, at the top fiber, the bending stress will be compressive or tensile. Sir, it will be 0. Why? Sir, because the bending moment is 0, that's why. Okay, correct. What is the difference between altitude and elevation? Sorry, sir, I find it the same. So I need to read about it. Okay. Where the boiling point of water will be more? It will be more in Goa or it will be more in Shimla? So boiling point of water will be more in Goa as compared to Shimla. Why? Sir, because as we go up, the pressure reduces, atmospheric pressure reduces, and the boiling occurs when the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So, for that reason,
Goa will have a higher boiling point. Okay. Saransh, my last question to you, that suppose you are building a three-story building in a city like Delhi, and you are building a three-story building in a village where the population is very less. What difference you will adopt in your design while building a building in city and a village? Sir, both lie in earthquake-prone region 3 because All very other less. can, okay, all All other things are earthquake, same. seismic zone, everything is same. Live load will be same. Everything is same. Sir, if the economic situation of the village area people is not good, then I will look for low cost housing things which are recently coming into picture. Sir, that is providing normal frame windows rather than providing wooden frame for windows, as well as for the gates also. That is wherever there is possible to cut down the charges, such as providing not slanted roof rather than providing a proper roof. Other than that, sir, I will also look into this because a three-story building might require the same load bearing capacity. If the in the village area there is there is more land which is present, then I will prefer to make a single story or a double story, not more than that, so that the load carrying capacity reduces and the material which will be required will also reduce. In that case, Can the factor of quality of safety, material. can factor of safety can be reduced? No, sir, I don't think factor of safety should be reduced for this. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Saransh. Thanks, sir. Yes, sir. Okay, Saransh. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, do you know about factor of safety? Yes, sir. Sir, What is that? sir, factor of safety is the ratio of the ultimate stress which the member can bear to the working stress which to the design stress which the member is bearing. Okay, so you are saying ultimate, why not yield? Sir, it depends. That is for steel, it will be yield stress, but for concrete, it's ultimate stress. Why? Sir, because we consider steel to fail when it has yielded, but concrete is a brittle material and it doesn't yield, it directly fails. So that's the Okay. reason. Okay. So, have you seen like bending equation? There is an assumption. Plane section remains plane before and after bending. Yes, What sir. does it indicates? Sir, it indicates that the cross section will be rectangular even after bending. It will not change. Okay, rectangular section will be rectangular after bending. So Yes, there sir. will be no change in width. There will be no change in depth. That is the case. No, sir. Sir, other than that, the strain profile is also linear along the section. Strain profile is going to be linear. Okay. Yes. So when we are talking about columns, what is the concept of core, kern, or kernel? Sorry, sir. Can you please repeat actually? In the column, concept of core, what is core or kern? Sir, core region or the kern region is a region in which if the axial load acts, then there will be no tension anywhere in the concrete everywhere. Okay, so why you don't want any tension? Sir, because we design generally the columns with concrete or an reinforced cement concrete, and concrete is very is able to resist very less load in tension. Also, if tension occurs, there are high chances of generation of cracks, which can deteriorate the reinforcement present inside. So that's the reason why we don't prefer tension. Okay, so what do you understand by rolling friction? Sir, is it related to highway engineering? It is general term also, from mechanics also. Sir, rolling friction. Sorry, sir, I can't. I'm not aware. Okay, so when we are talking about the principal stresses, what are the various ways to find out? So first is to find out, we can find it out by the Mohr circle. Other than that, sir, we have formulas for the same, which some formulas which has been derived mathematically.
There are two ways. Other than that, sir, we can practically we generally use strain rosette to find the strains, and from there we can find the principal stresses. Okay. So have you seen that there is a matrix of stresses we write? Stress matrix we write sigma xx, sigma Yes, yy, sir. tau xy. So can you, if I give you a matrix Yes. 3 by 3, can you tell me what will be the three principal stresses just by looking at that matrix? Sorry, sir. If the coordinates other than the diagonal members are 0, then they will be principal stresses. But if they are not, we need to calculate the same. Okay. So do you know that mild steel is showing two yield points? One is upper yield point, lower yield point. Yes, sir. So which one is the real yield point? So the lower yield point is the actual yield point. What is the problem with upper one? Sir, I'm very sure about it. Can I make an attempt? Yes, sure, sure. Once the loading has been is taking place after some time, sir, there is a uh, sorry, sir, I can't recall. I'm very sorry. Okay. Do you know any material which do not follow Hooke's law? Sir, Hooke's law, sir, ductile materials such as aluminium doesn't follow proper Hooke's law up to elastic strain. It does not have a normal stress is not directly proportional to strain. So In after a and elastic for strain, no one will follow Hooke's law, na? yes, sir, up to elastic strain. Yes, sir, up to elastic strain, aluminum does not follow. It has a curve, and for the same reason, we use the principle of proof stress. Okay, so how you will find out Young's modulus for aluminium then? Young's modulus is the slope. So how you will find out? Sir, sir, Young's modulus is defined as the ratio of initial stress to strain in such materials. Okay, over to you, sir. Hi, Saransh. How are you? I'm fine, sir. So, first of all, congratulations for being selected for the final round. So, how do you feel? Sir, I feel great. I feel good to be part of this interview. All right. So, what is that one quality which made you clear the examination in your first attempt? Sir, if we was on just one quality, it would be consistent hard work. All right. So, in the spin and swing question, you mentioned that the ball deviates its path from its path. What is the science behind this? Generally, when a bowler only rubs only one side of the ball and not the other side, so that one is a shining surface which is smooth and the other is not as much from the shining smooth uh, from the same, and hence higher velocity and as per Bernoulli principle, there is low pressure on the shining side, whereas on the other side there is high pressure, due to which when the ball strikes the ground, it shifts from higher pressure to lower pressure. It deviates from higher pressure. Okay. What is reverse swing? How it happens, reverse swing? Sorry, sir, I'm not aware about the actual working of reverse swing. Is it related with the Magnus effect? Sorry, sir, I'm not aware.
Okay, fine, no problem. When we go to the higher altitudes, you must have visited Shimla, Kullu, Manali, higher altitudes. So nose bleeding is a Yes. very common phenomena at higher altitudes. What is the reason behind that? No, sir, I can't. Have you I'm not aware experienced about it. nose bleeding? Have you experienced? No, sir, I haven't experienced. That is why you are not aware, right? Okay, so what is atmospheric pressure? So the pressure which the surrounding air or applies on ends is the atmospheric pressure. What is its value? To 5 into 10 to the power 5 pascals. In mercury column? So it is 760 millimeters of mercury. 760 millimeter of mercury. How do we get this 760 millimeter of mercury? So as we know, the pressure is equal to rho into G into H. If the density of mercury is 13.13600 kgs per meter cube, and by dividing it with rho into G, we get this value. Do we get this value? Have you tried? If we divide this atmospheric pressure by density of mercury, that is 13,600, and multiplied by 9.81. 9.81 you are saying, or some other value for gravity? So 9.8. So are you getting 760, or is it does it deviates from 760? As far as I am recalling, it was not exact 760. It was 758.2. I'm not exact about, but it was a little. There was a little deviation, but we assume it as. Why there is a deviation? Why we are not getting 760, and why we are getting something else and we are using something else? Sorry, sir. I need to read about it. All right, no problem. Blood pressure, is it more than atmospheric pressure, or is it less than atmospheric pressure? Sorry, sir. I'm not aware. Okay. Blood pressure is around 180, 80 to 120, right? Millimeter of mercury. Okay. No problem. What is Archimedes' principle? Sir, Archimedes' principle states that whenever a body is submerged in a liquid, exerts a force in the to the liquid to bring so much volume of the body which is submerged into gravity. And this was Archimedes' principle. Okay. So can the volume of displaced fluid be more than the volume of the body? Is it possible? No, sir, it can't be possible. It can't be possible. Are you sure? Sir, I have read and into is. Okay, one last question from my side. What is cavitation?
So cavitation is a low pressure phenomena which occurs when the pressure is less than the vacuum pressure. When the pressure is less than the vapor pressure, this leads to the formation of bubbles. And when these bubbles travel in high pressure zone, they burst, and there is a striking of water from a side. This leads to damaging of the products. Sir, this is cavitation. So it is bad, right? It is not good. Or it can be Yes, sir. useful. Cavitation. Have you ever heard about any situation where intentionally cavitation is used? No, sir, I haven't heard about it. But yes, sir, I think yes, it can be used for something good as well, depending on the situation. What is that? Which situation? Sir, I'm saying that, sir, yes, sir, I can also think about it. If we need to, there can be an application for cavitation, sir. Uh, what is it? I need to read about it. Okay, fine. Thank you, Saransh. Thank you, sir. Okay, Saransh, so your interview part is done. We can have some feedback discussions now. So Yes. your introduction part, your confidence about the technical, definitely sirs will tell you. Okay, but the beginning part, your confidence is reflected. You are well prepared, and you have everything to support you. Like you have good gate rank, you have decent academics, you have cleared mains in first attempt. So technically, it's all okay. Means profile wise, if I'm telling. Introduction when you gave about yourself, it was very brief. It can be a little bit more elaborate. Hello, Yes, sir. Saransh, are you able to hear Yes, me? sir, you're right. Yes, yes, yes. Yes, sir, I'm here. So your introduction part, I felt can be a little bit elaborate. You just started and stopped. So maybe, you can include some more things about you, maybe your characters or maybe your hobby. You can mention, all those things. Mention my BTech project, but because that's the only experience which I have. No, your voice is getting cut, I think. Sorry, sir. Sir, I was asking that can I add a BTech project because it's the only experience which I have. Okay. But yeah, if you mention something, please take care of the fact that, you are inviting them to ask the question. So if you are very well, aware about what was your BTech project, how you have done A to Z, then go into that. I mean, anything, whether BTech project or what, anything you say in introduction can become a next question. Be aware for that also. Yes. Okay, like you mentioned cricket in DAF. So we had a discussion on that. Similarly, whether something is in DAF, especially DAF, whatever points you have written in DAF, na, okay, be well prepared about it because that is your application, your own application form. Okay, so if you have written, they can pick up any point. Okay, जैसे मैंने क्रिकेट को पिक किया, but they can pick up any other point. So be well prepared about DAF. Interview आपका कब है? So 30 October. 30 October. So you still have more than 2 weeks to go. So at least your DAF part, okay, you have filled some specializations, the departments also where you want to see yourself. So why you have preferred one Yes. department over the other? Okay, so that also you should be clear. If you're giving this is my priority number one. Okay, so why is it that something might be on the last priority? Okay, why is that on last priority? Yes. So if not only that department but everything on DAF, थोड़ा सा अच्छे से देख के रखना. Okay, rest all okay, confidence and all that matter is good. Okay, presentation is good. Dressing, I think that day you're following the same dress code or what is the plan? Actually, my suit will be ready by tomorrow. So from then I will be. Yes. Okay, fine then. Fine. Sir, technical, Abhinav sir, Dheeraj sir, Chandra sir. सारांश Yes, कैसे sir. हो? Good. सर बस चल रही है प्रिपरेशन. एक तो थोड़ा नेटवर्क बीच बीच में कट रहा था. देखो आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन था ना वो काफी सही था, लेकिन जब टेक्निकल में आए और एक दो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस कम हो गया. वो कॉन्फिडेंस कम या आंसर देने का इंटेंसिटी कम नहीं होना चाहिए.
वो तो वही टेस्ट कर रहे हैं ना कि बच्चा 3 क्वेश्चन देने के बाद एकदम से एनर्जी कम हो गई तो यार मतलब ये प्रेशर नहीं झेल सकता है। तो आपको आंसर सही अच्छा अच्छा। देने के साथ साथ या आंसर नहीं आता के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस एक मेंटेन करना पड़ेगा। उनको दिखाना है कि यार मैं चलो मतलब आपको टेक्निकली क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहे तो ऑल इंडिया रैंक 3 के बाद आईआईटी जेई क्लियर करने के बाद अगर आप 4 आंसर 5 आंसर नहीं भी दे पाओ तो ऐसे कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है। आप अपने आप को टेक्निकली बहुत ज्यादा प्रूव कर चुके हो तो उस वजह से कॉन्फिडेंस कम या आंसर देने की इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगा कि जैसे ही आपने 2-3 आंसर गलत दिए तो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई हो, मे बी वो नेटवर्क इशू की वजह से भी लग रहा हो। दूसरा जो वो है कि वॉइड रेशियो फाइनल का ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। वो एक्चुअली कोजन कार्बन इक्वेशन जो है वो बाकी सारी चीजें सेम होंगी तब डायमीटर वायमीटर सेम है तब जिसका ई ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें डायमीटर भी एक फैक्टर आता है ना। तो जब बाकी सारी हाँ चीजें हाँ मतलब हाँ अगर हाँ। सैंड सैंड को कंपेयर करोगे सेम डायमीटर का तब जिसका वाटर रेशियो ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सैंड और क्ले को उसको एक ही फॉर्मूले में नहीं कर हम्म। सकते हम। और यस यस यस। गांव में बिल्डिंग बनाओगे वहां बिल्डिंग बनाओगे उसमें एक बहुत कॉमनली ये सिविल इंजीनियर से पूछा जाता है उसमें आपको वो फंसाने की वो चाहते हैं कि बच्चे बोल दे कि गांव में फैक्टर सेफ्टी कम रखेंगे है ना। तो आपको तो बोलना है भैया मैं सिविल इंजीनियर हूँ मैं आईएस कोड के हिसाब से बनाऊंगा चाहे गांव में बना रहा हूँ चाहे शहर में बना रहा हूँ मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जितने भी यस। अभी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो बॉम्बे दिल्ली हाईवे हो उसका आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर जितनी भी हैवी बिल्डिंग्स है ना उसमें जो फाउंडेशन होती है वो पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन ही होती है क्योंकि शैलो फाउंडेशन में इतना हैवी लोड नहीं आ पाएगा। बुर्ज खलीफा हो ताजमहल हो सब में आपके पास डीप फाउंडेशन ही होती हैं है ना। तो आपको अपना आंसर जैसे आप फर्स्ट जब राकेश सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जब आप उस समय आंसर दे रहे थे तो वैसे ही आपको आंसर टेक्निकल में भी देना है चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो तो तब भी कॉन्फिडेंस से रहना है ना। बाकी एक चीज मैं गेस कर रहा हूँ बताना यस। सही बोल रहा हूँ कि नहीं। वो जो राकेश सर ने क्वेश्चन पूछा था कि 3 क्वालिटी बताओ जो आपको आईएएस ऑफिसर में आपके अंदर हैं और 3 ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर नहीं है। तो वो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो ना उस क्वेश्चन के लिए कि मेरे को ना बोलना नहीं आता सर मैं या मैं प्रिपेयर किसी था। और काम कर लेता हूँ। वो ऐसा लग रहा था कि भाई ये प्रिपेयर करके है एकदम नेचुरल नहीं लग रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके मतलब ओके आपका ओके, फिर नेचुरल इसको सर होगा मुझे नेचुरल नहीं कैसे पता बनाया जाए? उसी समय बनाया बट आपने। हाँ मतलब नहीं सर, मैंने बनाया है बट उसमें मैंने एग्जांपल्स भी लगा दिए अपने रियल लाइफ से, स्ट्रेंथ्स में नहीं लगा दिए, वो वीकनेस। बहुत अच्छा है कि मैं किसी का ना नहीं कह पाता हूँ वो बहुत अच्छा ड्रॉबैक है अपना। और मैं कभी कभी हेल्प करने की जगह दूसरे का काम करने लग जाता हूँ ये बहुत अच्छा है। मतलब उस आंसर में कोई कमी नहीं है पर ऐसा लगा कि एकदम मतलब रट के पूरा तैयार बैठे हैं एकदम क्वेश्चन पूछा झगाड़ से आंसर बोल दो। बाकी इंडिया डेफिनेटली जीतेगा वर्ल्ड कप। पर्सनली अगर मैं इंटरव्यू में होता तो मेरे को ऐसा सही नहीं लगा बिल्कुल। अब हम पैट्रियोटिक हैं लेकिन डेफिनेटली आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि इंडिया डेफिनेटली मतलब आप बोल सकते हो कि हाई चांसेस है क्योंकि हम इस कंडीशन से फेमिलियर हैं हमारी टीम इसमें अच्छी है ये है बाकी ठीक है लेकिन डेफिनेटली तो कुछ नहीं कह सकते ना। सर मतलब एकदम एब्जॉर्ब, मतलब वैसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगाना है। हाँ स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगाना है आपको। और लास्ट पॉइंट की किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा खराब दोनों ही नहीं बोलना है उस वाले में आपको डिप्लोमेट रहना हाँ है हाँ ना। हाँ। आप बोल दो कि मेरे को बीजेपी बहुत अच्छा है पता चला उसके इंटरव्यू वाले के चाचा एमएलए विधायक है एमएलए कांग्रेस के तो मैं आपको इन सब में पढ़ता भी नहीं हूँ सर। ठीक है। बाकी तो मेरा ये है बाकी आपके मेरे को पता है मार्क्स कितने 300 से ऊपर आ रहे होंगे प्रीलिम्स में नहीं सर, 285 आ रहा है मेरे प्रीलिम्स में और बस। मेंस में सर मेंस में हो सकता है कि 420 तक आ जाए, तो वही है, अभी तो 420 और 700 285 600 600 600 700 700। तो बस सिलेक्शन तो आपका हो ही गया जहाँ अटेंडेंस भी लगा दोगे वहां पे सिलेक्शन तो सर हो ही गया। सीपीडब्ल्यूडी चाहिए सर। सीबीएसई में कितनी सीटें हैं? 6 कितनी है इस बार? 10 10। 10 है। ठीक है देखते हैं ऑल द बेस्ट। बाकी धीरज सर चंद्र सर आपका कुछ सर आप म्यूट में है ना म्यूट में जूम में आवाज नहीं आती अभी आजकल। पहले भी नहीं आती थी सर। तो ट्राई करके सरांश सर देख रहा जी, क्या? वैसे तो सारे पॉइंट सर ने कवर कर ही दिए तो टेक्निकल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो जैसे एक तो मैंने आपको वो मैट्रिक्स वाला पूछा था, स्ट्रेस वाला। तो उसमें जब आपको खाली मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप उसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे तो वही होती है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है। तो और इसके अलावा बाकी तो आपने वो तो बता ही दिया। और जैसे आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया ना, रादर देन सेइंग अल्टीमेट आपको बोलना चाहिए फेलियर स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस।
अब वो फेलियर यील्ड भी हो सकती है, अल्टीमेट भी हो सकती है, तो उसमें दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, Yes. बाकी तो आपने सही दिए थे आंसर। और रोलिंग फ्रिक्शन मैंने वैसे ही पूछा था, वैसे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन से नहीं था, वो मैकेनिक से था। तो जैसे आप जब 11th क्लास में भी फ्रिक्शन वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे आता है कि जब हमारी गाड़ी चलती है एक्चुअल में, तो उस समय पे प्योर रोलिंग मोशन होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, अनटिल हाँ स्किड हाँ ना करे। तो वो उसमें आता ही है कि हम वो क्यों लगाते हैं व्हील्स को, मतलब सर्कुलर शेप में क्यों नहीं रेक्टेंगुलर, क्योंकि वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। रोलिंग yes फ्रिक्शन 1/100 टाइम्स होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए ही वो हम प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली। तो yes वो जनरल क्वेश्चन था, बाकी अच्छा ही था। बाकी जैसे सर ने कहा, आई एग्री कि आप थोड़ा सा रॉन्ग आंसर होने के बाद ऐसे लग रहा था कि एकदम कॉन्फिडेंस चला गया है। तो अच्छा वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रॉन्ग आंसर में आपको शर्माने के बाद ऑल इंडिया रैंक 3 है, आईएएस क्लियर कर दिया, आप रॉन्ग आंसर होने दो, 10 के 10 रॉन्ग आंसर होने दो, कॉन्फिडेंस कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो, पर वो जो आपका एक नेचुरल जो शुरुआत में था वैसा ही रहना चाहिए, yes है ना। और स्पिन और और स्विंग का क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि वो स्पिन वाला स्लो बॉल कराता है, स्विंग फास्ट बॉल सर कराता आता नहीं था, फिर मुझे लगा दे दो, बोल दो कुछ। और थोड़ा सा जैसे अभी तो शायद आप घर पे बैठ के दे रहे हो, तो थोड़ा सा देना, तो इतना रिलैक्स होके नहीं बैठना। ठीक ओके। है, तो वो एक मीटिंग लग रही थी रादर देन इंटरव्यू। अच्छा उसका यस भी सर। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ओके यस सर। सर। चलो, दूसरा रैंक कौन मिलेगा फिर हमें शिवपुरी से इस बार? सारे पॉइंट्स सर ने कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। वही मेरे को भी वही लगा, जो स्पिन और स्विंग का बाद में एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छा किया। जब मैंने उसको डिटेल में पूछा तो आपने, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो बेटर है उसका टेक्निकल ही आंसर दो, वरना वो बड़ा डाइल्यूट हो जाता है, पर्पज ही डाइल्यूट हो जाता है। तो सर ने फिर उसके बाद एक और डिफरेंस आपको बता ही दिया। तो बाकी सब ठीक है। आप बताइए, आपको कुछ पूछना हो, हम लोगों से कुछ जानना हो तो। मेरे क्वेश्चंस के तो ज्यादातर आपने स्किप ही किए। स्विंग वाला क्वेश्चन जवाब आपका बहुत अच्छा लगा, और कुछ नेटवर्क इश्यू भी रहा मेरे मेरे टाइम पे काफी। तो आपको कुछ पूछना हो स्पेसिफिकली तो आप पूछ सकते जी सर। सर मुझे एक चीज पूछना था कि क्या जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ के नहीं जाने होंगे, तो क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए? सारांश देखो, क्या है ना कि जनरली बार्क में एक फिक्स चीज है। उन्होंने, चेयरमैन ने 2-3 नॉन टेक क्वेश्चन पूछे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 99% केस में कि अपने फेवरेट 3 सब्जेक्ट बताओ। लेकिन आईएएस में ऐसा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बार्क से तो मतलब बहुत कम है। बार्क में तो मतलब फिक्स्ड है कि वो पहला ही चीज पूछते हैं कि अपने 3 फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं है, क्योंकि वो जो मेंबर हैं वो आपके पास किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे होंगे या पहले आईएएस रहे होंगे, और एक आध मेंबर एनआईटी का टीचर भी होता है, तो वो उनके सब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि भाई हमको इसी में से पूछना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 3 को कौन सब्जेक्ट आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे 2016-17 में मेरे को याद है कि एक सर्वे का टीचर पैनल में बैठा हुआ था, या सर्वे का एक मेंबर, वो हर बच्चे से, जो भी उस समय मेरा स्टूडेंट आईएएस के लिए गया है, वो पक्का वो कहा है कि वो एक सर हैं, वो 5 क्वेश्चन सर्वे से पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो इसका कोई आंसर, मैं आपको जबरदस्ती हीरो बनने के लिए आंसर दे दूं कि ये 4 पढ़ लो, लेकिन वहां पे तो मेंबर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उसका कोई आंसर है ही नहीं, ना कोई आपको दे सकता है। अगर कोई दे रहा है तो वो आपको फॉल्स ही आंसर दे रहा है ना। यस सर। बल्कि हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि आप रिसेंट जो भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसका आप सेंट्रल विस्ता हो या हाईवे हो दिल्ली बॉम्बे, उन सब का आप देख लेना, क्योंकि वो सिर्फ वो मेंबर ही नहीं, वो चेयरमैन भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। बाकी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इतना शायद ना फंसो। ज्यादातर बच्चा क्या होता है ना, स्पेशली आप जैसा बच्चा जिसने कभी प्रैक्टिकल में काम नहीं किया है ना, कोई लोग होगा जो एनटीपीसी में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर देना इजी पड़ जाता है। लेकिन जो कॉलेज गोइंग बच्चा है, जो कभी फील्ड में इतना ज्यादा गया ही नहीं, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो पर थ्योरी से रिलेटेड नहीं, वो आउट ऑफ बुक हो, कि यार वो वाला डैम हम बना रहा था, जैसे मेरे एक दोस्त से पूछा था कि वो वाला डैम हम बना रहे थे, तो उस डैम में पानी रुक ही नहीं रहा था, 6 महीने हो गए, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हम लगातार डैम बनाए जा रहे हैं, पानी रुक ही नहीं रहा, तो फिर क्या दिक्कत रही होगी। तो उस समय उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था इंटरव्यू में, 180 मार्क्स थे, परविंदर सिंह। तो उसने आंसर दिया कि सर आप सेडिमेंट्री रॉक यूज कर रहे होंगे जो पानी में घुल जाता है। तो उसने कहा यार बहुत सही, यार मैं तो 6 महीने बाद मैंने रिपोर्ट चेक किया, 6 महीने तक इतना वो पैसा वेस्ट किया। तो ये आंसर आप उन्हीं से एक्सेप्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब एक जो बच्चा है, वो उससे जरूरी नहीं कि ऐसा आंसर कर पाए, तो उसमें आप नहीं भी दे पाओ तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यही पूछना था।
सर बाकी सर कितने क्वेश्चंस ऐसा है कि तुम ना बोलो तो भी काम चल जाता है कि तुम्हें डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे? सर आप जितनों कितने का आपको आंसर नहीं आता है और आप गैस भी नहीं कर सकते हो, आप ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपने एक पॉइंट पे बोला भी था कि मैं गैस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद आपको आता है तो गैस करो, जहाँ बिल्कुल नहीं आता है ब्लफ मत करना। हाँ अगेन देखो, सर लोग ने बोला, हमेशा याद रखना, सबने बोला कोई बात, कि टेक्निकली आप प्रूव कर चुके हो। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये टेक्निकल टेस्ट नहीं है। ये कॉन्फिडेंस अपने माइंड में रखना बस, कि आप प्रूव कर चुके हो, प्रूव करने नहीं जा रहे हो टेक्निकल। ये एकदम सबसे पहली लाइन आपके ब्रेन में होनी चाहिए, कहीं पे भी फंसो कि मैं प्रूव कर चुका हूँ, कोई बात नहीं। आज इंटरव्यू है, ठीक है, मेंस को हुए टाइम हो गया, भूल गया चीजें, ठीक है, या आज इंटरव्यू के प्रेशर में भूल गया, बट मैं इन लोगों को प्रूव करने टेक्निकल नहीं आया हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी प्रूव करने आया हूँ। ठीक है, yes, 4 आंसर अच्छे दूंगा, 4 शायद नहीं भी दे पाऊंगा, नहीं आता, वो मेरा एरिया नहीं है। ठीक है, जैसे सर ने सर्वे वाला एग्जांपल दिया, मान लो वही कोई सर्वे वाला कोई इंटरव्यू आ गया और आप सर्वे बिल्कुल नहीं टच में हो, तो आप बोल सकते हो सर कैन वी स्किप दिस, नॉट करेंटली इन टच विद सर्वे। हाँ बट सर। वो बोलने का कॉन्फिडेंस और जो लिहाज होगा ना, वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स को डिसाइड करेगा। सर दिस थिंग जो आपने बताया ऑलरेडी प्रूव कर लिया टेक्निकल, तो इससे मुझे काफी ठीक लग रहा है कि हाँ नहीं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, एक चीज जो हम्म सर सर मार्क्स कितने देंगे सर ये जो पूरे टेक्निकल? मार्क्स आपको हमारी टीम बताएगी, और ये रॉ अच्छा वीडियो भी आपको एक मेल आएगा जिसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ताकि किसी रैंडम बंदे को हम ये रॉ वीडियो ना दे दें, हाँ है हाँ ना। तो आप एक्नॉलेज जैसी मेल पे करोगे तो आपको ये रॉ वीडियो मिल जाएगी, मार्क्स भी आप वही आपको बताएंगे, है ना। और अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ऑल्टीट्यूड होता है हाइट विद रेफरेंस टू हाँ। मीन सी लेवल, एलिवेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डेटम। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, हाँ, कुछ होगा सर कांटेक्ट कर लूंगा हाँ, आपसे। आप तो कर लेना फोन पे। Yes, sir। ठीक है।